We are truly very delighted to have you here with us on this momentous occasion. Before we begin, let's take a moment to acknowledge the legacy that has brought us here together. Speaking of Lohia Global, that is a value-driven, deep-rooted Indian business conglomerate built on the principles of integrity, innovation, and inclusive growth. From humble beginnings to becoming a respected name across sectors such as automotive, manufacturing, handicrafts, exports, and engineering, the group has always stayed grounded in its purpose to serve the nation through sustainable, impactful business solutions. With a strong belief in Make in India and a commitment to empowering everyday Indians, Lohia Global continues to shape industries while staying connected to its ethical and cultural foundations. And that brings us to this very special moment. Well, today's event is not just a product launch, let me tell you all, it's the continuation of a larger story of transformation, purpose, and progress in India's electric mobility journey. For over 16 years, Lohia Auto has stood as a name synonymous with reliable, accessible, and sustainable mobility across India. A legacy brand that helped lay the foundation of the EV movement in our country. Carrying forward that legacy, Youdha was introduced as a new age force in the electric mobility, one that reflects the power, resilience, and ambition of India. Lohia and Youdha today stand together, one rooted in legacy, the other driving the future. And today, we are gathered here to witness a major milestone, yes, the launch of Youdha's first flagship electric vehicle, a robust and future-ready solution designed for Bharat's real warriors, our everyday drivers, fleet owners, and entrepreneurs. It's more than just a vehicle, it's a trusted companion on the journey to success and independence. Thank you once again for being with us today as we embark on this really exciting new chapter built on strength, shaped by legacy, and driven by the future. Mr. Ayush Lohia, CEO Youdha, let's invite him onto the stage to address the media, ladies and gentlemen. Please give it up for Mr. Ayush Lohia. Good evening, friends. It's an honor to welcome you all today as we mark a defining moment in our journey, a moment where legacy meets ambition and vision takes the lead. For over 16 years, I had a privilege of leading Lohia Auto, a brand, a company that began with a simple idea to make this electric mobility accessible, reliable, and proudly Indian. We started small, stayed grounded, and over time we have become one of the most trusted names in e-mobility space, especially in e-category 𝗙𝗵𝗄 segment. But growth is about evolution. As India, so did VI. This is what led to a creation of Youdha, a brand that carries forward Lohia values, but with a fresh chest, identity, and a renewed ambition. Youdha is more than a name, it's a mindset, a brand designed not only to serve but to inspire. It reflects the spirit of India's everyday warrior, the driver, the fleet operators, and the entrepreneurs, who deserve more than just a vehicle. They deserve a brand that respects their hustle, amplifies their identity, and supports their journey. With Youdha, we are no longer just part of the EV industry. We are trying to shape the future.
We are Make in India, made for Bharat. In every sense, we have our integrated manufacturing facility in 𝗙cie𝗄𝗋, a strong and growing R&D backbone, and our dedicated dealer and service network across India. And most importantly, we have a clear mission to build high-quality electric vehicles that deliver real value, real performance, and real empowerment. Which brings me to today's milestone, the launch of our first flagship product, Youdha Epod. The Epod is more than a brand launch, it's a brand statement. It reflects everything Youdha stands for: the sturdiness, reliability, aspiration, and affordability. We have built this vehicle keeping in mind the most important person, the driver. It offers unmatched features, long-term durability, and a comfort-first design, all at a price point that we believe will disrupt L5 passenger segment. This is our way of democratizing electric mobility by making the best accessible way, not just a few. With this launch, Youdha stepped into a elite circle of India's leading EV manufacturers, and we just getting started. Our vision for the next 5 years is clear: to expand our product portfolio across passenger and cargo EVs, to deepen our presence in high-quality regions across Bharat, and to build that only moves people, but not only move people, but will uplift them. In closing, I want to thank you, every member of Lohia and Youdha family. This launch will not have been possible without your belief, your grit, and your relentless hard work. To members and media, thank you for your constant support and encouragement. Your stories help us reach the people who matter the most: the drivers, the fleet owners, and the entrepreneurs who power India mobility every day. This is just the beginning. The Youdha journey has only started, and together we will take it to every corner of this country. Thank you, everyone. सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने ये 3 व्हीलर लॉन्च किया है, क्या कुछ खास है इसमें, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी 3 व्हीलर्स हैं? तो देखिए, ये व्हीकल मैंने अभी भी बताया कि हमने 2.79 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोड वर्दी प्रोडक्ट है, और इसके अंदर हमने वो सारे फीचर्स दिए हैं जो एक व्हीकल 3 व्हीलर के अंदर होने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर 6 किलोवाट की मोटर लगा रखी है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो IP67 रेटेड के हैं। इसके अंदर 11.8 किलोवाट आवर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अंदर 7 इंचेस का डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो ये सारे फीचर्स डिफ्रेंशिएट करने के फीचर्स हैं। इस व्हीकल का टॉर्क जो है वो 55 Nm न्यूटन मैट्रिक टन का टॉर्क है, विच इज़ किसी भी और का प्रोडक्ट में इतना हैवी टॉर्क नहीं दिया हुआ है। तो उससे ग्रेडेबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों पे बहुत मदद मिलती है। चार्जिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारी जो व्हीकल है ये अभी 4 से 5 घंटे में चार्ज हो सकता है। नॉर्मल होम सॉकेट से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्पेशल सुविधाएं दी हुई हैं, जिससे हम जब व्हीकल कोई भी कस्टमर ख़रीदेगा तो उसी घर पे हम अलग से चार्जिंग सेटअप कराने की सुविधा देंगे, जिससे बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेंगे। रेटिंग की बात किया जाए तो एक बार चार्ज होने के बाद ये 227 किलोमीटर की रेंज देगी एक बार चार्ज होने के बाद। रेटिंग की बात की जाए तो रेट की बात की जाए, प्राइस जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्राइस है 2,79,000 रुपीज़। और इंस्टॉलमेंट की बात करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखिए, व्हीकल जो है इंस्टॉलमेंट कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। हमारे को ये लगता है हम बहुत जल्दी एक अट्रैक्टिव इंस्टॉलमेंट स्कीम के साथ भी प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि हमारे मल्टीपल फाइनेंसर, रिटेल फाइनेंसर्स इस व्हीकल को फाइनेंस करेंगे, तो हर एक की अपनी अपनी ब्याज दरें होती हैं और वो काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे, एक ब्याज दर पे और EMI पे आपको गाड़ी मिल सकती है। जल्दी ही हम बाकी स्टेट में भी
लेके जाएंगे। पहला हमारा टारगेट यूपी, बिहार और असम का है। सर, ये आपने योद्धा नाम रखा है और व्हीकल से कैसे डिफरेंट है योद्धा क्यों रखा है? देखिए, योद्धा हमें ये लगता है कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है या जो हम जिन भी लोगों के साथ जुड़े हैं वो अपने आप में एक योद्धा हैं। वो डेली सुबह से शाम तक अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह से शाम तक कई कार्य ऐसे करते हैं जो कई ऐसी दिक्कतों का सामना करते हैं जिसकी वजह से वो एक योद्धा के रूप में ही काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें पुराने ज़माने में अगर हम बोलते थे तो योद्धा जो होते थे वो फैमिली को बचाते थे, उनका हेल्प करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे। तो उसी तरीके से आज का आदमी खाली दिक्कत चेंज ये हुआ है कि पहले उसे लड़ाई लड़नी लगती थी, लेकिन वो लड़ाई का जो रूप है या जो उसे डेली की एक्टिविटी करने का रूप है वो चेंज हो गया। अब उसे अर्निंग करनी पड़ती है अपनी फैमिली को पालने पोसने के लिए, तो उस रूप को ध्यान में रखते हुए हमने योद्धा वर्ड का यूज़ किया। सर, इसमें अगर मेटल की बात करें तो किस का उपयोग किया गया है वस्तुओं का? देखिए, इसमें बेसिकली तो 80% मटेरियल जो है वो स्टील मेटल यूज़ किया है हमने। बाकी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, थोड़े बहुत रेयर अर्थ मेटल के भी कंपोनेंट्स हैं और वायरिंग कॉपर के और बाकी सारी के भी, तो काफ़ी एल्यूमिनियम के भी प्रोडक्ट हैं, तो काफ़ी प्रोडक्ट का यूटिलाइज होता है इसमें। क्या टारगेट लेके चल रहे हैं और कब तक? हमारा इस साल का 3000 गाड़ियों का टारगेट। सर, बरसात में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनमें काफ़ी कमियां देखने को मिल रही हैं। क्या लगता है कि ये देखिए, मैंने आपको बताया 𝗙𝗵𝗲 व्हीकल है, मैंने अभी भी आपको बताया हमने कंपोनेंट 𝗙𝗵𝗲 यूज़ किए हुए हैं। तो जो नॉर्मल चैलेंजेस आते हैं, लोगों को पानी में बंद हो जाती है या वो चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे इस गाड़ी के अंदर। एक अंतिम सवाल, थ्री व्हीलर चलाने वालों के लिए क्या कुछ कहेंगे अपनी मैं अपने ड्राइवर साथियों से या जो ई-रिक्शा L5 ऑटो चलाते हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, आप आएँ, इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। आपको खुद महसूस होगा कि ये व्हीकल कितना डिफरेंट है और कैसे ये उन्हें मदद कर सकता है। वो जब आप इंक्वायरी करेंगे, आप स्टॉल पे आएंगे, शोरूम पे आएंगे और इसके बारे में टेस्ट ड्राइव लेके इसे देखेंगे, तभी आपको महसूस होगा। कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।